ओके यार, सो अभी हम हैं ग्लोवेस्टरशायर में और एक और नई जगह पे हम आए हैं। हमारा जो दोस्त है ब्लैक स्मिथ रावेंसथोप से, गनार जिसका नाम है, वो यहाँ पे आया हुआ है अपनी वाइफ की खोज में। सो रांडवे ने हमें बताया है कि वो यहाँ पे गया हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्या उसके मन का वहम है, रियलिटी में कोई वाइफ है जो उसके लिए यहाँ पे है। सो यही सब हम देखने आए हैं और उसकी प्रोटेक्शन करने भी आए कि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। सो यार, एक और नई जगह पे हैं, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पहला हमारा जो मकसद रहेगा वो रहेगा गनार को ढूंढना, और उसके बाद में यहाँ का जो भी एल्डरमैन होगा, जो किंग होगा, उससे बातचीत करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ से भी अपनी जो अलायंस है वो गेन करने की कोशिश करेंगे। सो यार, फिर शुरू किया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए आई गेस कि ओपन घूमने में दिक्कत हो गया नहीं होगी, आई डोंट नो। देखो एक बंदा है यहाँ पे, देखते हैं। ओके, सो इसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे हुड करने की जरूरत नहीं है, हम फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं, रोम कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अब एक मिनट, यह जो सिटी है इसे वेस्ट में बताया ना, जो टाउन, ठीक है, जहाँ पे गनार हमें मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा मतलब। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक जगह है। यहाँ पे जो सामने वाला हिस्सा है, जो हाईलाइटेड एरिया है, इसमें हमें गनार मिलेगा। सो चलते हैं फिर इसी तरफ, इस तरफ से। सो यार, लास्ट एपिसोड में हमने जो यूर्विकशायर है वहाँ पे जो अपनी अलायंस है वो कंप्लीट करी थी, और जो प्लेस अभी हमने प्लेस किया है ग्लोवेस्टरशायर को। नेट्स टाउन काफ़ी अच्छा है इस तरफ। अब बस गनार का कोई साइन मिल जाए। There you are, Gunnar. And with a smile like I haven't seen in some time. ये रहा बंदा, Over here. आ गया। Eivor, thought I smelt you on the wind. Gunnar, with the speed you left home, I thought you've been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here. Bridget. My own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. With my Zigrili. ये क्या हो रही है? Good to meet you as well. How did you find a woman in these backwoods? She came through the settlement selling runes, outshone every stone in her satchel. Okay. She offered me a trade, a rune for a brooch I was making. I got a better deal. But she loves the ugly little thing. What? Have you a family, Bridget? Nath mama dad carried of Angilla than Anon. हाँ? Canon have drews me. मैं ट्रांसलेट कर दूं? Bridget Man Power, the last high priestess and elderman. ओके। Since passed on. सो इसके जो मदर फादर थे वो यहाँ के एल्डरमैन थे लास्ट। Looks out for her. गजब। I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim jolch. You two bags of air sich o gumpas gilydd. That Eivor gal clis llawn. Right, no daylight to waste then, huh? ओके ओके, सो यार, इसके जो मदर So फादर the थे elderman may have वो heard यहाँ a के tale or elderman two थे। about my exploits. Not all from me. अभी हम Your चलेंगे name यहाँ के जो will be करंट on the एल्डरमैन है lips of उससे every मिलने। skull for years to come. And the Mercians here are not unsettled by lurking Vikinger? They come from all over to celebrate Samhain. Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain? Is that what these carved roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let us bring a few back. ओके, सो गनार हमें मिलाने के लिए लेके आया है यहाँ पे जो एल्डरमैन है उनसे। There is the elder man. Kunan!
A good leader, seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevdur. ये बंदा कौन है? Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be Ealdorman after Cunan. Okay. Tevdur, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick, the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? एक्चुअली यार इसको क्या बताएं अभी कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? आए तो एक्चुअली अपने फ्रेंड के लिए ही है ना? I am here to hasten my friend's marriage and drink my weight in ale. If friendship comes afterwards, then all the better. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated god-right kings for puppet rulers? So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevdur? Cider? What side? Ah, you must be Eivor. Tevdur, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevdur, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah, yes, the shrine. And with so many thieves and fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Cunan, I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without even the memory of warm thighs and cider to sustain him in the afterlife. Then, by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tefter? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Okay. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Okay. Well, shall we then? जरूर सर. तो अब यह इसका लास्ट समहैन है जो सेलिब्रेशन होने वाला है. ओके, टेल ऑफ विकर फायर. सो यहाँ का नया सागा हमें मिला. अभी जो यहाँ का एल्डरमैन है उसका ये लास्ट सीजन है. और उसके बाद में जो टेवडर है यह बनेगा यहाँ का नया एल्डरमैन. सो अभी इसको एस्कॉर्ट करना है हमें. ओके. Fires and magic, spirits in the air. Come on, boy. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. A festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the Apparently the Franks. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around. It lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the Reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we not going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenhelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. ओके, रसो जो बंदा है टेवडर यह भी प्रेयर करने जा रहा है और हम इसको एस्कॉर्ट करेंगे यहाँ पे कि इसको कोई दिक्कत ना हो. यहाँ का जो एल्डरमैन है कुनन उसके कहने पे. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You are a kinder man than the mask you wear.
But you won't be rid of me. I will keep my word to Kunan for your safe return. ओके सो बंदा यहाँ पे प्रेयर कर रहा है। एक मिनट, I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? Oh Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I will not have to interrupt your prayer to protect you, Tefter. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Tefter, get to safety. ओ बोर, और वो Find भी somewhere to hide. जंगली। They come from. एक मिनट, डन, कम ऑन। अब ये कहाँ है? एक मिनट, वो रहा ना। चला, इसको सेफ्टी की जरूरत नहीं थी और ये पेल देते इसको। That was close. नहीं भाई साहब को तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी ना। एक मिनट, इसे बातचीत करेंगे बट पहले अपनी लूट तो कर ले। दूसरा किधर गिरा था? हाँ जी, ये बोलिए। Eivor, thank you for saving my life. It's good I was here to protect you. Maybe Kunan has the eyes of prophecy. Splood, cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Gloucester. Unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Kunan... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Okay then. फिर कोई बात नहीं है। I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. जरूर। सर अब बंदा यहाँ पे प्रेयर कर ले, तब तक हम निकलते हैं और चल के अपना जो दोस्त है गनर, उससे चल के बातचीत करेंगे। और आज जो रात को जो फेस्ट होने वाला है, तो यहाँ का जो एल्डरमैन है उसका लास्ट फेस्ट है। उसके बाद में जो टेवडन है ये यहाँ का एल्डरमैन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें शायद इसकी प्रोटेक्शन में लगाया गया। और अभी अपने दोस्त से मिलते हैं फिर चल के। गनर से लव बर्ड बना हुआ आजकल बंदा। यहीं पे ना? Eivor, there you are. Here I am. So, what adventures did you find in my absence? Escorted Tefter to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but path now usually safe. To the Brevo. यार ये बोलती क्या है? But you saved his hide. I bet it was quite the sight, two of you as a pair. I kept my word to Kunan, and that spatcock Tefter lives. Restraint, Eivor? I was half expecting you to wallop the lad around the head and ass. I've bridged hands with most of England, Gunnar. And I've held my temper around worse than Tefter. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Okay. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Niguiscalan Vela Sprudjan and Creatures of the Vale. The bag for treats. Gloucester gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely Really? given? Huh. I've only seen such a thing done at feasts.
Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. Oh, It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. ये क्या है? Nonsense. You are the very spirit of the Mary Louved. Now, let's hooden. Become the Mary Okay, so Louved. यह कोई The spirit यहाँ पे who sings for cake रस्म है, and कोई ale. फेस्ट है जिसमें And you cannot have your cloak back ट्रिक until we leave. और ट्रीट I'll keep this covering. ठीक But है। even a knife to my हमें throat जगह cannot जगह make जाना me है और जो sing डोर्स under- उन पे नॉक करना है। Gunner, एक मिनट, if no one... ऐसे देखते हैं क्या होता है। Trick or treat! What business have you? Oh, the Mary Lwyd. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Samhain night and the moon is high. Mary Lwyd haunts my door. The air is chilling, and ghosts are spilling all across the misty moor. Oh, ghosts and beasties. Here, spirit, take your reward. ओके, मोल्डी चीज। तो हमें यहाँ से चीज मिले तो जगह जगह हमें जाना है और जो डोर्स हैं Spirit. उन पे नॉक Can करना है। trickster spirits see? ओके, The eye holes in this mask are terrible. All it takes is a mask and some sweet cakes to turn you into a gentle skull. I am not going to sing, Gunnar. इस तरफ ना। Good. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. ओके, सो यहाँ से भी अपने को मोल्डी चीज मिले हैं। एक Lads मिनट, getting into their cups, इस तरफ। scaring the wee ones. Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. Hope to gods this Mary Lwyd doesn't fail. Ah, have a cake for your troubles then. Look at these cakes! Sweet as honey, Gunnar. You should see this. गनार कहाँ है? Gunnar! My cakes! भैंस की आँख। सो यहाँ पे ये कोई हम एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें हम डोर पे जाके डोर नॉक कर रहे थे और हमें बदले में जो चीज केक्स हैं वो मिले हैं, बट गनार कहाँ पे है? अभी तक तो हमारे साथ था। एक मिनट, ओके, Aid me. Be my eyes. यहाँ पे वो जहाँ पे रश हो रखा वहाँ पे तो गनार नहीं होगा। एक मिनट, मोस्ट प्रोबेबली बंदा वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, राशन फुल है ना? Gunnar! और आना सामने। Damn deserter. And piss off back to your shit smeared hole. You are either fearless or stupid, boy, to speak to someone of the Raven clan this way. Fitting name for क्या पंगा हो scavengers. गया यहाँ पे? Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hooden more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, him tall. अबे ये क्या है? It's you lot we should be burning ओ तेरी तो, really? Are you sure you don't want to stay in Gloucester? They know how to अबे बंदे ने have गनार fun. को तो पेल दिया है, हमारी बारी है क्या? अभी Force चलो। bears my leg. एक मिनट, चला लात मारता है। Buenavallis McCallum. ओ भाई साहब, बंदे रेंडी ओटन बना हुआ है। अबे भाग कहाँ रहा है? Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about.
I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher, I brought you into this world, wiped your mother's birth blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Tilukis. Modron's a gumpas to patch this land. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on SAMHAIN. But I fear for the fragile peace when Tefter becomes eldermen. With Dean and Fall. Regardless of Poisiel Puar. That man called you a witch. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire. But I offer my healing services on both sides of the river. Okay. Gwyneth, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before you return. Give me strength. My mam Modron is known I'm a humor towish Gudran. I'm glad you're all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you don't have to save his leg. I will understand. That limb will be fine. But no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. ओके सो यारा यहाँ पे मतलब ये जो फेस्ट चल रहा है इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को पार्ट बनाते हैं एक्टिविटीज़ का। सो यहाँ पे पहला गया है अपना गनार फिर वो बंदा यार भाग ही गया, कोई नहीं। सो अभी अपन आगे चलते हैं और चल के बातचीत करते हैं टेवडर से। अभी जो यहाँ पे कोई फेस्ट है जिसका नाम है सैमहैन, उसकी रात चल रही है और इस रात में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी और शायद जो यहाँ का एल्डरमैन है कोनन, उसकी ये लास्ट नाइट है। उसके बाद एल्डरमैन है वो टेवडन बन जाएगा। ओके सो अभी अपने को चल के टेवडन से ही बातचीत करनी है। और बंदा कहाँ पे होगा अभी? With bitter ale and sweet friends, that is a fine way to end the day. हाँ वो रहा ना। Eivor, there you are. Yes. Tefter. You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Join us. The lad will be easy विलियम कौन है? pickings. ओके सो कुछ ड्रिंक करने का यहाँ पे चैलेंज होने वाला है। एक्चुअली अगर आपको याद हो हमने अभी तक ऐसा कोई भी चैलेंज जीता नहीं है ड्रिंक वाला। सो आज आजमाए जाए फिर। Give me a cup. Some ale then. One for me as well. For shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwilym. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearths and humid eyes, it is the best drunkenness returns a man to royal reason. Skull. ओ कह रहा देन इट्स टाइम नाउ। शुरू किया जाए फिर। Too strong for you. Staggering already? कितने पीने? 6 पीने हैं क्या? Be kissing a flagstone Come on, boy. soon. जल्दी आज जीत के निकलना है। Drink, man! Drink! Rule monger. Come on. अभी तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। Don't hurl into the barrel, okay? लास्ट वन। इजी। घूम गया सब कुछ। ओके बेबी, फाइनली।
Tefter. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and old. Of all the ealdormen I've met, you're the most unburdened. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. So यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या कि जो एल्डरमैन है वो खत्म हो जाएगा कुछ प्रैक्टिस में? खैर देखते हैं. A toast then to Elderman Coonan, joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevder. May he wear the horns head high. सो टेवडन की लास्ट नाइट है आज. बंदा सेलिब्रेट कर रहा अच्छे से. उसके बाद कल से एल्डरमैन. Weak. What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the man. Give him something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sorehead tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an arse. Do not deny it. And I, for that, I am sorry. Okay. A colossal horse's arse. Yes. Soft words from the heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? Tefter, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah! The greatest oath, and the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! ओके भाई साहब टून हो रखे हैं यहाँ पे तो. People are sleeping. हिल रहा है सब कुछ. More ale to seal our friendship. मतलब काफी रात हो गई है और पूरी रात हम लोगों ने चढ़ाई है यहाँ पे. Look out for the black sow. Sow? Like pig? Flaming pig. ये देख रहे हो चला भी नहीं जा रहा. Chases you home at night. Silly words to scare silly children. You seem magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue. I have to piss. A great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and मुझे light. लगा मैं फिर से गया. Whoosh! Here we are. ये क्या सवेरा हो रहा है क्या? Right here. Tefter! Tefter! अभी कहाँ गया बंदा? Tefter! Where are you? Oh, come on, man. मिल गया फिर से. एक विलियम अपने पास में ही है क्या?
Oh. Done. Oh. Hell's breath. What happened last night? ये क्या blood? And the effects of that draft still cling. ये क्या था हाथ पे? After, are you here? ओके रसो, अपनी जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गई है, बट जस्ट वेट. ओके, क्लू एंड रिडल्स, न्यू क्वेस्ट. एक मिनट, कल रात को हुआ क्या यार यहाँ पे? यहाँ पे एक बॉडी गिरी हुई है ना. एक मिनट, हम नशे में थे और नशे में क्या क्या हुआ है? Tefter's bodyguard, killed by knife. ओके, सो टेवडर का बॉडीगार्ड है जिसको चाकू से मारा गया है. एक मिनट, यहाँ पे ये भी बिखरे हुए हैं ना. This part has been broken and it's covered in blood. सो कोट है जो टूटा हुआ है, तो हो सकता है वहां पे जो बॉडीगार्ड था उस पे चाकू से हमला हुआ और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड था उस पे पोर्ट से. ओके, और इस तरह ब्लड क्लॉट है ना. Blood. Could be Tefter's, if he was the heavy thing being dragged. ओके, जैसे कि फिर बंदों को घसीट के यहाँ से लेके गए. और एक मिनट, इस तरफ कुछ और भी मिलेगा अभी तो. Muddy footprints. Someone was hiding back here. ओके, यहाँ पे फुटप्रिंट है, मतलब कोई यहाँ पे छुपा हुआ था और सिचुएशन का फायदा उठाया. एक मिनट, अबे बाहर गार्ड्स क्यों आ रखे हैं इतने? इस तरफ क्या है? Willem's pouch. I wonder if it still has a little something stronger. But why is it here? एक विलियम का पाउच है. विलियम हमारे साथ में था. What does this lead to? और अगर आपको murderers hid here, एक मिनट, lying in wait while we approached outside. They jumped from the shadows to kill the bodyguards and to disable Tefter. Then they dragged him away. That accounts for everything, except Willem's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Willem's special something. Maybe Mother Modron will know the contents. ओके, तो मतलब देखो, यहाँ पे कोई बंदे आए और जो बंदा आया वो यहाँ से छुप के यहाँ पे पहले इस बॉडीगार्ड को पेला एंड देन आगे जाके सेटो में जाके उस बंदे को भी पेल दिया वहां पे एंड फिर घसीट के बाहर निकाल के लेके गया. ये इतना सब कुछ हुआ उसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विलियम है उसका जो पाउच है, हर्ब का पाउच, वो यहाँ पे क्या कर रहा था? ओके, इस तरफ तो बॉडीगार्ड है, निकलेंगे किधर से? निकलना तो होगा ना यार. एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं. चारों तरफ बंदे हैं. There he is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same. Coonan, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevder's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevder gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye. Your Raven clan will lose their chieftain. Get them out of here! Really? Okay, फिर एक मिनट. अबे साले, ये लड़ेंगे मेरे से? हाँ भी, तुम लड़ोगे? एक मिनट, यहाँ पे बंदे हैं ना? मतलब यहाँ पे यार हम पे इल्जाम लग चुका है और एक आपने मेन चीज देखी है, जो यहाँ पे डेथ हुई वो ठीक है, लेकिन जो टेवडर की बॉडी है वो भी हमें मिली नहीं है और ऐसे में हम पे इल्जाम लगाया गया कि हमने उसको पेला है. ठीक है,
यहाँ से निकलते हैं। सो जो जिस बंदी को वीच बोला था, आपको याद हो, जिसने इंटरवीन किया था जब हम फीस्ट फाइट में जुटे हुए थे डॉग पे, तो जो बंदी आई थी उससे चल के बातचीत करेंगे, शायद हमें कुछ हाथ लगे, क्योंकि वही जो टेवडर है उसकी एज ए हीलर के लिए काम करी थी, तो यहाँ पे वो मिलेगी हमें। एक मिनट, यहाँ पे तो बंदे हैं ना, इस तरफ से निकलते हैं। यहाँ पे अभी फाइट करने में कोई मतलब नहीं है यार, निकलते हैं पहले यहाँ से और चल के उस बंदी से मिलते हैं। एक मिनट, इस तरफ भी बंदे हैं। चल, अब तक जहां हम वेलकम थे अब नहीं है, और जगह जगह चप्पे चप्पे पे इनके बंदे हैं वो फैले हुए हैं। बंदी किस तरफ है? ओके, एक मिनट, इस बंदे से बातचीत करी जाए। Good traveler, what seek you? Perhaps I can help. My prices are competitive. So ये वो बंदे हैं जो हमें जानकारी देते हैं गियर्स के बारे में और बुक ऑफ नॉलेज के बारे में। Now, show me your map. There is a place here. ओके, एक मिनट, ये जो सोल्जर जा रहे हैं इनको जाने दो, इनसे अभी उलझने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल से दिमाग से काम लेना होगा। हाँ, इसी बंदी से बातचीत करनी है ना। Hello again. Mother, it's the friend of the mangled leg man. Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? कुछ भी ऑलराइट नहीं है। No, it's not. I awoke in Tefter's wrecked home. Blood, but no body. Cunan's men are after me for the lad's murder. Uh-oh. Did you stab him? Mother, can I see? Blood but no body? We must see what has happened to him. Do you recognize the contents of this pouch? A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwillem poured some of it into my drink last night. The effects were intense. Search the houses! Can't have gotten far! Okay. हमारे पीछे हैं क्या बंदे? If they know I've aided you, it'll be my head next. Can you? I've seen nothing and no one. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Halewyn. Yes. Halewyn's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great Ouse rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak to mortals, preferring the company of spirits. Now, I've business at Rolandrich. Find me there later. ओके यार, सो यहाँ पे जो भी हुआ है वो ठीक है, हम पे इल्जाम लग गया है। एंड देखो, कोई बंदा है, कोई मॉन्क है जो हमारी यहाँ पे अब हेल्प कर सकता है, और वो जो मॉन्क है वो किसी कॉटेज में है यहाँ से काफी दूर। सो हमें ईस्टर्न पार्ट में जाना होगा। जो ग्लोवेस्टर, यह जो सिटी है, इससे ईस्टर्न पार्ट में जाना होगा हमें, और वहाँ पे कोई हट है जहाँ पे वो हमें मिलेगा। उसकी कॉटेज वहाँ पे है जहाँ पे कानवेल और ग्रेट हाउस नदी है वो मिलते हैं। एक मिनट, मैप पे चेक करते हैं ना यार, थोड़ा समझ में आएगा। सो देखो, अभी हम हैं यहाँ पे, और उस बंदे की जो चांसेस हैं वो इस तरफ कहीं पे है कि हमें वो मिलेगा। ओके, यहाँ पे यह देखो, एक मिनट, यह ग्रेट हाउस रिवर है एंड यह कानवे रिवर है। सो ये मेरी है यहाँ पे, और इसके आसपास यहीं कहीं पे वो बंदा होगा। ओके, सो फिर बढ़ा जाए आगे, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। इस तरफ आगे बढ़ना है ना अपने को, इस तरफ, यहाँ से। ओके बेबी, ईस्टर्न पार्ट निकलते हैं। घोड़ों को बुलाया जाए फिर। यहाँ से निकलना इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब चप्पे चप्पे पे जो सैनिक हैं वो फैले हुए हैं इनके। एक मिनट, कम ऑन घोड़ू। तो ये अपना एक सच्चा वफादार है। चलो अभी यहाँ से निकलेंगे एंड उस मॉन्क की कॉटेज की तरफ निकलेंगे जो हेलियम है। ध्यान रखना कि कोई हमें देखे ना यहाँ पे। वैसे तो हमने डिस्गाइज किया हुआ है, बट स्टिल बंदे पीछे पड़ जाएंगे तो फाइट होना तय है। किसी ने नोटिस किया क्या? एक मिनट, थोड़ा सा ऑफ रूट लेते हैं ना यार।
इस तरफ से निकल के चलते हैं। ओ ओ ओ, पंगा तो होना ही था ना। कम ऑन घोड़ू। यह लोग सैन्य टुकड़ी है जो पैदल है, तो यह लोग ज़्यादा दूर नहीं आएंगे हमारे पीछे। ठीक है, आई गेस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी हम नॉर्थ में जा रहे हैं। नॉर्थ में नहीं जाना, अपने को ईस्टर्न पार्ट में जाना है, वो ठीक है, पहुंच जाएंगे। जो मोंक है उसकी कॉटेज को हमें ढूंढना है। सो शायद कुछ राज है वो दफन हो, वो हमें देखने को मिले। एक्चुअली यार हम पे इल्ज़ाम लग गया है टेवडर है उसकी मौत का, और उसकी बॉडी तक हमें मिली नहीं है। और यहाँ का जो एल्डरमैन है कुनन, उसने हम पे यह आरोप लगाया है। सो अभी इतना आसान हमारा यहाँ पे रहेगा नहीं, और हम वेलकम भी नहीं रहेंगे। एक मिनट, Show me what lies ahead. इस तरफ नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही है। एक मिनट, मैप में देखना पड़ेगा क्या। हम यहाँ पे पहुंच गए ना, मतलब इस तरफ अपने को कहीं पे चलना है। ठीक है, सही जा रहे हैं ना, इस तरफ से निकलते हैं। Something is wrong. Foul. Curse it. क्या यहाँ पे कुछ और ही दिक्कत हो रही है। कस्ट लैंड है। ओके, अभी के लिए निकलते हैं। अभी जरूरत है अपने को आगे बढ़ने की, और अभी तो यार हमारी खुद की जान है वो अटकी हुई है। कम ऑन घोड़ू, अभी रात का टाइम है तो बहुत सारे भेड़िए भी यहाँ पे होंगे। और क्या हम सही तो चल रहे हैं? आई डोंट नो। एक मिनट यार, हम आए तो हैं कहीं पे। अब ये जगह क्या है? Go, my eyes. Just wait. हम आगे यहाँ पे इस तरफ कहीं चल रहा है ना। ओके, अरे यहाँ पे जब से हम आए हमें सब कुछ ढूंढना ही पड़ा। पहले गनार को हमें ढूंढना पड़ा था, और अब यह जो मोंग की कॉटेज है इसको ढूंढना पड़ेगा। सो मतलब सब कुछ इतना आसान है नहीं यहाँ पे, राइट? किस तरफ होगी? यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई साइन नहीं मिल रहा है। एक मिनट, चल तो सही रहे क्या हम? इस तरफ बंदे हैं ना आगे। Have a look, Sunan. इस तरफ कुछ है तो सही, वहां पे। ओके, सो इसी तरफ बढ़ते हैं आगे। मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, क्योंकि कॉटेज मुझे एक ही दिखाई दी है दूर दूर तक। इसी तरफ बंदे आगे बढ़ रहे हैं ना। ओके, यहाँ पे है तो सही यारा कुछ। ओके ओके ओके, ड्रूइड की कॉटेज यही है। जस्ट वेट। सो हम सही जगह पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं। The fellow's land is peopled by men of straw. ये देख रहे हो यार, मतलब बंदे ने कुछ अलग ही बना रखा है। ओके, Just as Modron said. Maybe I should disguise myself. हाँ यार, डिस्गाइज करते हैं ना, शायद अब बंदा इंटरेक्ट करे हमसे। Oh, Spirit, you have finally come. Days ago,
A passing cloud foretold your arrival with droplets of sun-scented rain. But what form of being are you beneath this guise of horse and bone? From the realm of the Fae? I know you cannot say. I press no more. Whatever you be, now you are here, the ritual may begin. Oh, but the men of straw must announce you with sparks. Ignite the sky to begin anew, here at the death of the season. Until then, I await you, giving thanks in the glen. ओके यार, सो यहाँ पे कोई रिचुअल है जो ये बंदा करने वाला है और हमें इसकी हेल्प करनी है। सो ये देखो तो हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट है, इनको हमें लाइट अप करना है। ओके ओके, सो इनको लाइट अप करना है ना। एक मिनट, डन। Now let them speak in chorus. तो जितने भी हैं हमें यह जलाने हैं। Another joins the throng. इस तरफ भी है। आग पकड़ेगा क्या लग रहा है? Another. ओके, सो जितने भी ये जो स्केयरक्रो जैसे हैं हमें ये लाइट अप करने हैं। नो प्रॉब्लम, हो जाएंगे। There be cacophony. One more. है कहाँ पे एक और? एक मिनट, इस तरफ कुछ रह रहा है क्या? हाँ, एक रह गया ना। डन। They roar. Do you hear them? A chorus of fire. That should be the last one. Back to the druid. ओके, सो अब बंदे से बातचीत करते हैं। Speak to me, O wind. I've come to ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me pause. Are you truly a spirit of light? I am a spirit as any other. Then prove it. You must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charms. Very well. Ask your riddles. Which is the charm that weds souls? ओके यार, सो ये बंदा हमें रिडल पूछने वाला, कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसके जवाब हमें देने हैं। अभी हमारे पास में वो जवाब नहीं है। ओके। Give me a measure of time. Are you a spirit of darkness? If it be not so, come back and try anew. जरूर। What are these things he's asking me? There must be trinkets around his house that will help. ओके यार, सो जो यह बंदा पूछने वाला है उसके जवाब यहीं कहीं पे होंगे। ओके। This dagger is placed upside down. सो हमें यहाँ पे सब कुछ। एक मिनट। A hangman's noose, a knife, and the vile smells of poison. 3 ways to kill someone. ठीक है, हर चीज का जवाब यहीं पे होगा, बस हमें ढूंढना है। ओके, एक मिनट। 2 ladles carved from a single branch. The grooves match. ओके, अभी तो और भी कुछ होगा क्या? वहां पे भी कुछ है। तो बंदा हमें जो भी सारे क्वेश्चन पूछेगा उसके जवाब यहीं पे हैं, बस हमें ढूंढने हैं। The statue of a woman, Sabrina, watches me from the water below. ओके, अभी कुछ और रहता है ना ऊपर उसकी हट में, उसकी कोटेज में, सॉरी। ठीक है, देखते हैं, फिर चलते हैं उसके पास में। यह वाला क्लू कहाँ होगा? ओके, शायद बाहर की तरफ मिलेगा।
This symbol is one I've seen carved into shields and headstones. ओके, सो आई गेस कि हमने एरिया एक्सप्लोर कर लिया है पूरा, अब कुछ नहीं बचता है। अभी करें इसे बातचीत। May not speak to Eivor, but perhaps he will speak to the spirit of the Mary Luid. ओके, मेरी लुइड से तो बातचीत करेगा, हमसे तो नहीं करेगा। Speak to me, O wind. Have you found yourself? If you are a spirit of light, answer me this. पूछिए। Which is the charm that weds souls? The charm of the double spoon. Yes, such that a wedded pair can sup broth together. Man and woman are made of earth, of water, and wind. Which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? Threefold death stops life's wind, returns a body to earth, and renders water into poison. Threefold death is the charm. Which charm protects from evil spirits? The symbol of the Celtic nut wards off harm. A secure knot indeed. Only one of light need not fear it. You are a spirit of light. Mabon be praised. Would you like some bread and cream? No, just the answer to a question. This herb pouch made its way to Gloucester in the hands of a strange man. Do you know it? Aye. A mix to help him sleep. I filled this very pouch. And over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Couthlodrin. Couthlodrin? Okay. Very well. I thank you, Halwyn. But this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Okay. So, Yara. Couthlodrin. Strange name. Meanwhile, Modron awaits me at the stones nearby. ओके यार, सो अपनी जो क्वेस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और थोड़े से जो राज हैं वो भी उजागर हुए हैं। देखो, जो पाउच था जो बनाया गया था वो बनाया गया था जो इसी बंदे के द्वारा, और वो बनाया गया था कि गहरी नींद में सुलाने के लिए वो पाउच बनाया गया था, जिससे कि जो बंदा उसको पिएगा वाइन में डाल के वो गहरी नींद में सो जाएगा और अपने होश हवास में नहीं रहेगा। और शायद उसी चीज़ का यूज़ करके उन लोगों ने उसको टेम्पटर को बेहोश किया एंड उसके बाद उसको पेल के मार के लेके गए हैं या जिंदा लेके गए हैं, आई डोंट नो। सो यार, अभी अपनी क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड अभी उसका पता करेंगे। उसकी बॉडी मिली नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली उसकी बॉडी भी हमें मिल जाएगी एंड उसके बाद में चल के ढूंढेंगे उसको। सो किंग को अभी ढूंढना बाकी है यार। Survey the area, Sunan. सो अभी इस क्वेस्ट में इतना ही रखते हैं इस एपिसोड में और करेंगे मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। So till then, bye bye and see you soon, guys.